Hi guys, am I audible to you now? Hello everyone, am I audible? Hi guys, am I audible to you now? Okay, yes, thank you. चलिए फिर शुरू करते हैं. Last time हम लोग audible नहीं थे. So guys, I'm Aditya Kashyap and we will come up live again with part 9 of CPC MCQ series. Okay, 1908. So Code of Civil Procedure, CPC MCQs, 1908, part 9. Okay, previous year question, which is relevant for judiciary, APO, LLM exam, and other law entrance exam, right? In which CPC is asked. So let's start our series. Okay, part 9. Start करते हैं. So before starting the question and answer series, let's recall some fact related to CPC. So CPC is a Code of Civil Procedure 1908. It came in force on 1st of January 1909 and it consists of 158 section and 51 order, and it is applicable to whole of India except state of Nagaland and tribal area, right? And it is a law related to procedure and it applies to civil cases. Okay, civil cases are, for example, matrimonial cases, family disputes, property disputes. These are the civil cases. So अब हम लोग स्टार्ट करते हैं question and answer series of in the form of MCQs, right? So let's begin with the question number 1 of CPC. The question is related to alternative dispute redressal. Okay, so it is the relevant section of ADR is 89 to 93 under CPC. Okay, so let's begin with the question number 1. Section 89 of CPC deals with which one of the following? So it deals with what? Settlement of dispute outside the court. So under this provision of section 89, we have three provisions related to ADR. The first one is mediation, second one is arbitration and conciliation. And negotiation is not included under this provision. Okay, so this is all for this question. आगे बढ़ते हैं. Provision for settlement of dispute outside court has been provided. So provision for settlement of dispute outside the court has been provided under section 89 of CPC. And what it talks about? It's talk about the alternative dispute redressal mechanism, which is provided under section 89. And under this, we have three type of provision. The one is arbitration, second one is mediation, and conciliation. Okay, आगे बढ़ते हैं. Which of the following section in the Code of Civil Procedure 1908 deals with settlement of dispute outside the court? So, settlement of dispute outside the court is dealt under which section of CPC? So, we have already seen this question. Let me know in the comment section answer. So, already the answer is mentioned. It is 89. Section 89 of CPC was inserted in. So, Section 89 of CPC was inserted in 1999. Okay, so and the provision related to ADR was laid down in which case? So, it was laid down in APCON international cases, है ना? आगे हम लोग देखेंगे. चलिए आगे बात करते हैं. तो question number 5. The court under section 89 clause 1 of CPC can refer the dispute for. It can refer the dispute for mediation और लोक अदालत. सही है. Arbitration और conciliation हम लोग देखे थे. Conciliation और mediation ये भी होगा. So all the above is the correct answer. Question number 6. The Supreme Court of India has laid down the law relating to alternate dispute resolution process and section 89 of CPC civil procedure in the case of, so it was laid down in the case of Acon Infrastructure Limited versus Cherian Warke Construction Limited. Okay. Question number 7 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है
Which one of the following modes of settlement of dispute outside the court has been provided in section 89? So arbitration, conciliation and mediation, right? आगे बढ़ते हैं. Where it appears to the court that there exists element of settlement which may be acceptable to the parties, the court can refer the parties for which of the following. So court can refer the parties for arbitration, conciliation and mediation, all the three, right? Hmm. अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 9 की ओर. So it talks about again section 89. So section 89 is very important provision and it was added in the CPC in 1999. Okay, and it talks about what ADR. Okay, so section 89 CPC 1908 provides that the mm, court shall attempt settlement of dispute. ठीक है ना? So in the cases where court is satisfied that there is a possibility of arriving at the settlement that may be acceptable to the both party. Otherwise जब both party को acceptable ही नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जो dispute हो उसको ADR में भेजा जाए, है ना? क्योंकि उस भेजने का कोई outcome तो निकलेगा नहीं. तो ADR में जब both party agree होता है तभी भेजा जाता है. इसीलिए इसको alternative डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी कहते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. Where it appears to the court that there exists element of settlement, the court shall. अब ये सिंपल सी क्वेश्चन है, हम लोगों ने अभी देखा. Refer the same for arbitration, conciliation or mediation, right? Question number 11 क्या कह रहा है? The provision regarding friendly suits. So friendly suit is mentioned under section 19 order 36. Okay. फ्रेंडली सूट के बारे में बात कहाँ पे किया गया है? अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. सो इसके रिगार्डिंग बात किया गया है सेक्शन 90 एंड ऑर्डर 36 में फ्रेंडली सूट के बारे में. ठीक है. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. हाँ, अब आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग का टॉपिक आ गया है अपील एंड सेकेंड अपील. So guys, appeal and second appeal, it is related to when the original trial court has provided a decree, and if you are not satisfied from that, then you have the provision, you have the right of appeal, and if you are also not satisfied with the appeal, then you have a right of second appeal. So guys, the very important point relating to appeal is it is discussed under section 96 to 99, all types of appeal. I'm including it under this section. Okay. And the relevant order related to appeal is order 41 to order 45, right? So this is the fact related to appeal and second appeal. ठीक है. अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे. तो क्वेश्चन नंबर 1 अपील से जो रिलेटेड है सेक्शन 96 क्लॉज 4 ऑफ सीपीसी inserted by the Code of Civil Procedure Amendment Act 1976 बास. सो ये क्या करता है? ये पेटी केसेस के केस में, अगर पेटी केसेस में भी अगर अपील करने लगे लोग तो फिर समझ रहे हो कि मतलब मुद्दा कभी भी खत्म ही नहीं होगा. तो इसीलिए इट बास अपील इन पेटी केसेस. ओके, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ पेटी केसेस क्या होते हैं? जो छोटे मोटे छुटपुटिया केसेस होते हैं, तो इसीलिए इसमें अपील नॉट अलाउड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है. तो ये कह रहा है एक अपील में लाइज फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टे. ओब्वियसली अगर कोई डिग्री जो है एक्स पार्टे पास कर दिया गया है तो इसमें तो अपील ऑटोमेटिकली लाइज करेगा. ये जनरल कॉमन सेंस भी कहता है. क्यों करेगा? क्योंकि जो एक्स पार्टी डिग्री है उसमें एक पार्टी को हर्ट नहीं किया गया है, और ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक नियम है जो कहता है नो वन शुड बी हर्ड अनहर्ड, है ना? सो इस केस में तो करेगा ही करेगा. आगे बढ़ते हैं. सेकेंड क्या कहता है? नो अपील सेल लाइज फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी. तो ये बात तो हमको सही लग रहा है, आप लोग बताओ, है ना? ये भी सही लग रहा है. तीसरा क्या कह रहा है? नो अपील सेल लाइज ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. ये गलत बात है. ठीक है ना? तो ये सही नहीं है. तो सही क्या क्या है? एक और दो, है ना? ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. एंड अपील सेल लाइज. तो अपील सेल लाइज क्या?
appeal cell lies only from such order as provided in the CPC. So appeal cell lies from those order which is provided under CPC, है ना? According to this question, the right answer is option B. क्वेश्चन नंबर 4 बात कर रहा है पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है where the defendant appears and the plaintiff does not appears. ठीक है, where the defendant appears and the plaintiff does not appears when the suit is called for hearing. ठीक है ना? डिफेंडेंट तो आ गया बट प्लेंटिफ ही नहीं आया जब हियरिंग स्टार्ट किया गया है. ठीक है, तो उस केस में कोर्ट शैल डिसमिस द सूट एंड द प्लेंटिफ शैल बी बार्ड फ्रॉम फाइलिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, तो ये तो सही बात है क्योंकि इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ, है ना, टू बी प्रेजेंट देयर. दूसरा क्या बात कर रहा है इसमें, एक सेकेंड. नो अपील में लाइज, नो अपील में लाइज फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ट एक्स पार्टे. यही तो रॉन्ग है ना? आप ही बताओ, अगर कोई डिग्री एक्स पार्टी पास्ट कर गया उसके अपील, उसमें अपील नहीं करेगा, ये तो एक प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो जाएगा ना ये बात. तो यही गलत है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. हाँ, ये बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस क्वेश्चन, फिर भी पढ़ लेते हैं. एन अपील में लाइज फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्स पार्टी. ठीक है, ये सही है. नो अपील सेल लाइज फ्रॉम अ डिग्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी. ये भी सही है. नो अपील सेल लाइज ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ. नहीं 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 नहीं, ये गलत है ना. एन अपील सेल लाइज ओनली फ्रॉम सच ऑर्डर एज प्रोवाइडेड इन सीपीसी. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. ये 7 भी वही बात कर रहा है, इसमें वही है. नो अपील में लाइज फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्सपायर्ड. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 में किस चीज की बात की जा रही है? इसमें क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहला कह रहा है नो डिग्री इज टू बी रिवोल्ड और मॉडिफाइड ऑन एरर और इरेगुलरिटी नॉट अफेक्टिंग मेरिट और जुरिस्डिक्शन. तो हम लोग भी जानते हैं कि कोई एक एरर और इरेगुलरिटी से अगर जजमेंट के मेरिट और जुरिस्डिक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वहां पे नो डिग्री टू इज टू बी रिवर्स्ड, है ना. ये प्रोविजन ये सही है. दूसरा कह रहा है कि एन अपील शैल लाइज फ्रॉम अ डिग्री पास्ड बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी. फिर क्या ही मतलब बन जाता है कंसेंसुअल डिग्री की, है ना. कंसेंसुअल डिग्री जब भी होगा तो वहां पे अपील क्यों ही लाई करेगा. तो ये स्टेटमेंट गलत है. स्टेटमेंट 3 क्या गया, एन अपील में लाइज फ्रॉम एन ओरिजिनल डिग्री पास्ड एक्स पार्टी. तो ये भी बात सही है. सो सही क्या क्या हो गया? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही हो गया, है ना. और ऑप्शन बी इज रॉन्ग. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री एन अपील शैल नॉट लाइज. सो अपील शैल नॉट लाइज a degree passed by the High Court, an ex parte decree, a degree passed by District Court, a degree passed by the court with the consent of the party. इस केस में अपील नहीं लाई करेगा. अंडर सेक्शन, under which section of CPC appeal is barred against a consent decree. So consent decree के केस में कौन सा सेक्शन है ऑफ सीपीसी जो कि बार्ड करता है, ठीक है ना, अपील के लिए? तो ये है सेक्शन नंबर 96 क्लॉज 3. सो सेक्शन नंबर 96 क्लॉज 3 क्या कहता है? ये बार करता है अगेंस्ट कंसेंट डिग्री कोई भी अपील करने के लिए. ठीक है, तो आगे क्या है? सेकेंड अपील पे आ जाते हैं अब हम लोग, है ना. फर्स्ट अपील खत्म हो गया, ठीक है ना. सेक्शन रेलिवेंट सेक्शन 96, है ना. आगे बढ़ते हैं. इसमें कह रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी सेकेंड अपील कैन बी फाइल्ड. सो दिस इज सेक्शन 100. ओके, सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी सेकेंड अपील की बात करता है ना. सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझना है नहीं. सेकेंड अपील अंडर सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी लाइज बिफोर. सो सेकेंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में लाई करता है ना. तो आगे बढ़ते हैं. किस इसमें कुछ बहुत खास है नहीं.
Essential condition provided under section 100 clause 1 of CPC for preferring second appeal is सेकेंड अपील के लिए जो इसेंशियल क्वेश्चन होता है वो होता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे अगर कुछ डिफेक्ट होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, तभी सेकेंड अपील लाइज करता है टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 100 क्लॉज 1। क्वेश्चन नंबर 4, under the provision of CPC, no second appeal lies in a suit for recovery of money not exceeding। सो CPC में सेकेंड अपील लाइज नहीं करेगा इन केस ऑफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग रुपीज 25,000। ओके, सो द ऑप्शन करेक्ट इज ऑप्शन ए। A second appeal shall not rise from any degree as provided under section 102 of CPC, where the subject matter of the original suit is for the recovery of money not exceeding 25,000. So the relevant section is 102 and the relevant amount is not exceeding 25,000. Then in that case, second appeal will not uh, uh, allowed, है ना। बात करते हैं, if the appeal is, सॉरी एक सेकेंड, सॉरी, if the appeal is heard by a single judge bench of the High Court, where does further appeal lies, है ना। So the further no further appeal lies in that case, है ना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following provision of the CPC prohibit further appeal against the decision of a single judge in second appeal? So the relevant provision mentioned under section 100A. Okay, 100A क्या करता है? It prohibits further appeal against the decision of single judge in second appeal। अगर सिंगल जज हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सेकेंड अपील को ये प्रोहिबिट करता है, ठीक है, सेक्शन 100A। सो सेक्शन 100A CPC where any appeal from an original or appellate decree or order is heard and decided by a single judge of high court, no further appeal shall rise from the judgment and decree of such single judge। Okay, our relevant section is 101। In second appeal, the reappreciation of evidence is not permissible। सेकेंड अपील में रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कभी भी परमिट नहीं किया जाता है ना। सेकेंड अपील हमेशा किस चीज पे देखा जाता है? सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज ऑन सेकेंड अपील? तो इनमें से दिए गए केसेस में सेकेंड अपील पे कौन सा केस है? सो द सेकेंड अपील पे जो केस है वो है मदन लाल वर्सेस बालकृष्णा। मदन लाल वर्सेस बालकृष्णा इज द केस रिलेटेड टू सेकेंड अपील, ठीक है। In which of the following cases the phrase substantial question of law under section 100 of CPC has had been explained? So substantial question of law under section 100 of CPC is explained under case State Bank of India and others versus SN Goyal। So State Bank of India and others versus SN Goyal 2008 केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रेज है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसको डिस्कस किया था, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज from my side। We are done with the appeal question based on appeal and asked in the previous year। Okay, so uh, yeah, now you guys can tell me some question which I have already asked you in the which I have already dealt with you in the previous classes। So let's start a quiz। First question: under which section of CPC decree is defined?
So under which section of CPC decree is defined? This is question number one. दूसरा क्वेश्चन है under which section of CPC judgment debtor is defined? Under which section of CPC judgment debtor is defined? तीसरा क्वेश्चन है under which section of CPC machine profit is defined? Under which section of CPC machine profit is defined? चौथा क्वेश्चन है foreign good is defined under which section of CPC? पांचवा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है या legal representative is defined under which section of CPC? So these are the five important definition of CPC. If you know, let me know in the comment section either right now or when you watch this session. No issue in that. I have already tell about this in our previous classes. So this is all from my side, guys. Thank you very much for joining the session. I hope you guys like it. So if you feel it is going to be help you and it is helpful for you, then please do like, share, and subscribe and be the part of this beautiful channel and beautiful family. Thank you very much for joining the session. Nice car. Correct. Correct answer. So this is all from my side. So let's end the session. Thank you very much for joining.